नमस्कार, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वर्ष योग दिवस का मुख्य आयोजन स्थल है कर्नाटक के मैसूर शहर में स्थित बेहद खूबसूरत मैसूर पैलेस का ये परिसर। मैसूर पैलेस को देश के सबसे भव्य स्थापत्य इमारतों में शामिल किया जाता है और आज इसी परिसर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हजारों योग साधक योगाभ्यास में शामिल होंगे। ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭೋದಯ. 8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರಮನೆ ನಗರಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್. 8th edition of International Yoga Day is celebrated on the national scale at Mysuru, the palace city and the cultural capital of Karnataka. Hearty welcome from Doordarshan to all our viewers. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is here at Mysuru to be part of Yoga Day celebrations. Theme of this year's 8th part of celebration is Yoga for Humanity. Area in front of the palace is filled with the yoga practitioners, 12,000 of them, and 3,000 yoga practitioners are pulled in from different state and central government organizations. 15,000 people have already settled down themselves to be part of the yoga celebrations along with Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन स्थल था दिल्ली का ऐतिहासिक राजपथ, जहां लोगों के भागीदारी के 2 गिनेस रिकॉर्ड भी बने थे। और इस वर्ष 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हो रहा है देश के मानचित्र पर अपनी एक खास पहचान रखने वाले खूबसूरत मैसूर शहर में। हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं, स्वयंसेवक, अलग अलग संस्थाओं और प्रतिष्ठानों से जुड़े लोग, समाज का हर वर्ग, सुरक्षा बलों से जुड़े लोग और सबसे बढ़कर आम जनता अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस महाआयोजन से जुड़कर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस मैसूर शहर में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करने का श्रेय हासिल हुआ है मैसूर शहर को, जो देश के मानचित्र पर अपनी एक बेहद खास पहचान रखता है। Mysuru has always mesmerized everyone with its rich heritage, quaint charm, beautiful laid gardens, magnificent palaces, broad and shady avenues, imposing buildings and holy temples that it possesses. The demon Mahishasura was killed by goddess Chamundi of the Chamundi Hills. It is in this regard that the festival of Dasara is celebrated, which represents the conquest of excellence over evil. The yoga capital of Karnataka, Mysuru, is once again making news for hosting Yoga Day this time, graced by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. And what's a prouder moment is it's the only city to have received this honor twice. Mysuru, when translated to Kannada, literally means happiness unlimited. For innumerable reasons, Mysuru is close to heart because Mysuru is an emotion. Mysuru silk saree, Mysuru mallige, Mysuru shrigandha, sandalwood, Mysuru pak, Mysuru masale dosa, Mysuru bonda,
Mysuru filter coffee, Mysuru chigurele, Mysuru sunna. What more, the voting ink is also made in Mysuru, and our Indian currency is printed in our own Mysuru. As one of the most popular yoga destinations, Mysore is known as the Ashtanga Yoga capital of India and the yoga capital of Karnataka. We are so fortunate to host this event on this great land of rich heritage, culture, which is a fine combination of the historic heritage and the contemporary achievements of the city. Let us now witness the most splendid cultural event which has touched and benefited crores across the world, and also this time unique because of its inclusivity of differently abled, LGBT and varied sections of its society, headed by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Yoga has the potential to herald in a new yuga, a new era of peace, compassion, brotherhood, and all-round progress of the human race. Yoga is not only about asanas, it's much more. It's a blend of gyan, knowledge, karma, work, and bhakti, devotion. संपूर्ण विश्व को भारत की अप्रतिम भेंट है योग कला, जो शरीर और मन को पूर्णता की ओर अग्रसर करने में सक्षम है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन बेहद खास है, क्योंकि इस साल हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस अवसर पर आज के दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल के 75 सदस्य देश के 75 अलग अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों पर योगाभ्यास में सम्मिलित हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमेशा की तरह इस महाआयोजन में देश का नेतृत्व कर रहे हैं और वे स्वयं महलों के शहर कहे जाने वाले मैसूर शहर में अब से कुछ देर बाद उपस्थित होंगे। गृह मंत्री श्री अमित शाह नासिक के पवित्र ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वर में योग यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमिलनाडु के कोयम्बटूर में योग कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। One of the foremost proponents of yoga and one who has made indelible mark on the front of yoga is from Mysuru, Padma Vibhushan Shri B.K.S. Iyengar. He was awarded Padma Shri in 1991, Padma Bhushan in 2002 and 2014 Padma Vibhushan. He is from Mysuru. Shri Shri Ravi Shankar is from Bengaluru and awarded Padma Vibhushan in 2016. And Shri H.R. Nagendra ji was awarded Padma Shri in 2016, and the latest one on the list is Sadguru Jaggi Vasudev ji with Padma Vibhushan. Yoga is a code to connect people with life and to reconnect mankind with nature. It expands our limited sense of self to see our families, societies, mankind as extensions of our own self. Yoga guarantees wellness as fitness. Yoga is not merely an exercise, but a way to attain peace through physical, mental, and spiritual well-being. Yoga is a symbol of universal aspirations for health and well-being. It is health assurance at zero budget. Yoga at Mysuru is based on the concept of one sun and one earth. 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन स्थल मैसूर पैलेस का ये भव्य परिसर अनुशासित अंदाज में जहां हजारों की संख्या में योग साधक अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी मैसूरू का योग के क्षेत्र में गौरवशाली इतिहास रहा है और आज उसी इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के रूप में। During the times of pandemic, yoga lent a divine support to people to breathe out of the breathlessness that was throttling the people. Yoga gave the hope to people
to hold on to survive and come out of panic of pandemic. The world realized the clutch of yoga towards purposeful life pattern, moving a little away from the routine of mundaneness that they had settled into. इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में न केवल मैसूर में बल्कि सारे देश में और सारी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से हजारों लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और योग की इस विधा से अपने आप को आत्मसात करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस वर्ष बेहद खास गार्डियन रिंग कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है। ये विश्वव्यापी कार्यक्रम है जिसमें भारतीय मिशंस द्वारा विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की डिजिटल थीम को एक साथ कैप्चर किया जाएगा और इसकी शुरुआत सबसे पहले लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से मशहूर देश यानी जापान से होने वाली है और सारी दुनिया में हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि योग की जो गौरव यात्रा है वो बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रही है और आज मुख्य आयोजन स्थल के रूप में मैसूर शहर में मैसूर पैलेस के इस भव्य परिसर में आयोजन हो रहा है। Guardian Ring showcases celebrations of yoga in 75 countries along with the movement of sun in 16 time zones, and you can view it on DD India, and this has begun already from the land of rising sun, Japan. And there are 75 iconic locations across India where, as a part of Azadi Ka Amrita Mahotsav, this International Yoga Day practice is on at 75 iconic locations. योग दिवस की व्यापकता और इसकी महत्ता को सारे विश्व ने पहचाना है, जाना है और सारी दुनिया को भारत की एक अलौकिक अप्रतिम भेंट है योग कला। इस वर्ष के योग दिवस आयोजन का एक और ख़ास महत्व है कि देश के ग्रामीण इलाकों में स्थित जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं उनको भी योग दिवस के इस महाआयोजन से जोड़ा गया है। इसके अलावा कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस के माध्यम से भी आम जनता को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ख़ास आयोजन से जोड़ने का अभिनव प्रयास हुआ है और उसी का परिणाम है कि लाखों की संख्या में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आम जनता हर खासो आम इस आयोजन से जुड़ रहे हैं और मुख्य आयोजन स्थल मैसूर पैलेस का ये भव्य परिसर जो पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है, जहां बड़ी संख्या में पर्यटन स्थल उपस्थित हैं, सांस्कृतिक वैभव की एक अनोखी परंपरा है, स्थापत्य कला का अनुपम नमूना है ये मैसूर पैलेस, जिसके परिसर में मुख्य आयोजन हो रहा है। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is on dais, and Rajamata Pramoda Devi is there on dais to welcome Shri Modi ji, and Shri Yaduveer Narasimha Dutt ji is on dais, and Honorable Prime Minister is right here. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, उपस्थित जन समूह का अभिवादन करते हुए केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत और कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री श्री बसवराज एस बोम्मई भी मंच पर उपस्थित जन समूह आह्लादित है, उत्साहित है, उल्लसित है इस अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह का हिस्सा बनकर।
And ladies and gentlemen, wishing you all a very happy 8th International Yoga Day. As you know, ladies and gentlemen, this year we are also celebrating 75 years of our independence. तो आइए इस साल जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस अमृत रूपी योग से मानवता की ओर बढ़े और वैदिक काल की ही तरह एक बार फिर भारत के ही द्वार से शुरू हो मानवता के लिए योग क्रांति. And this Yoga Kranti, the Yoga for Humanity, ladies and gentlemen, is starting from this very majestic state of Karnataka under the leadership of our Honorable Prime Minister. So at the very onset, may I request you to please rise at your positions for the state anthem as we extend our love and respect for our Karnataka, Namma Karnataka, with the state anthem, Nadagite. Jai Bharat, Jai Karnataka. Please take your seats. Ladies and gentlemen, under the leadership of Honorable Prime Minister, this year the Yoga Day celebrations are unique, for you're going to be seeing many new initiatives happening for the first time. And these, ladies and gentlemen, have been coordinated by our Honorable Ayush Minister, Shri Sarvanand Sonowalji, who's also the Minister for Ports, Shipping and Waterways. So to welcome everyone in this iconic Yoga Day celebrations, I request and invite Shri Sarvanand Sonowalji, our Honorable Minister, for his welcome remarks.
Namaskar. Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Karnataka, Sri Tharsan Gehlot ji, Honorable Chief Minister of Karnataka, Basabharaj S. Bumai ji, Honorable Minister of Corporation and Mysuru District in charge, S.T. Samasekhar ji, Honorable Minister of Health, Government of Karnataka, Sudhakar Rao ji, Honorable Dr. Pramada Devi Wadiar ji, Rajmata Mysuru, Honorable Yudhibir Krishna Datta Samaraja Wadiar, Maharaja Mysuru, Pratap Sinhaji, Honorable MP, B. Srinivas Prasad ji, Honorable MP, local MLAs, revered Yug Gurus, senior officers of Ministry of Ayush, Central Ministries, State Government, eminent dignitaries, expert of yoga, allied science and media person, and my dear friends. It is my privilege to welcome you all on the International Day of Yoga 2022 amidst the breathtaking beauty of Mysuru. After 2 tumultuous years of the pandemic, we are now celebrating IDY in physical mood. The state of Karnataka is gifted by God with rich biodiversity and has a rich history of arts, culture, and literature. It has won Gyanpidya, country's highest literary award, for maximum number of times. A historic celebration of the ancient Indian cultural heritage of yoga began on 13 March 2022 with the 100 Days Countdown campaign involving 100 organizations across 100 cities till today. With the collaboration of state and the union governments, ministries, events at various iconic sites across India have been observed. Now, this grand succession of celebration is culminating in Mysuru, the beautiful heritage city of Karnataka. We all realize that this is due to Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji's exemplary and continued efforts. The International Day of Yoga and the science of yoga has received recognition around the globe. The effort culminating in the celebration of the International Day of Yoga carry the vision of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji's vision to bring world peace and harmony by focusing on the health and well-being of individual, communities, nations, and the world as a whole. It is his personal engagement and consistent efforts that the world is experiencing an increasing spirit of yoga and its benefit. Under his able leadership, the nation is changing the world dynamics, and yoga has played a key role in that. Yoga has brought the world together, reshaping the global values, and is bringing different healthcare system closer. He has written to the head of the state of different countries and also head of villages in India to join together in spreading the message of yoga. This aligns with the year's theme, Yoga for Humanity, and the Ministry of Ayush has designed unique program to include various sections of the society to celebrate health and heterogeneity. We are involving the whole world through Guardian Ring program and whole government through celebration at 75 iconic places. There will be disseminations of yoga practices and research through exhibition in Mysuru Ground today and tomorrow, and also using IT asset such as Namaste Yoga, Yoga Portal, Vibreak application for its wider reach. We all remember that due to very concerted and proactive effort of the Government of India, yoga has been included in the UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity. Continuing the forward march, various Government of India and the Ministry of Ayush have taken various initiatives to ensure advancement in the health and well-being of people through yoga, such as
conducting National Yoga Olympiad in schools and declaring Yogasana as a competitive sport. Also, additions of Yogasana in the list of sports discipline for equipment of sports person to any group, C post and ministries and department of Government of India has been recently done on 17 June 2022. I further wholeheartedly thanks the people of Karnataka, the Government of Karnataka, all central government and state government ministries, defense forces, other uniformed service organizations, revered yoga gurus, celebrities and spokespersons, eminent dignitaries and associations associated with us who made this movement towards wellness through yoga a grand success. I also extend my gratitude to all the countries worldwide for their enthusiasm and support. I extend my heartfelt gratitude to the people of Mysuru for making this a huge success. Jai Hind! Thank you, Honorable Minister, sir. And now, ladies and gentlemen, requesting the gracious host Chief Minister, the Janapriya Mukhyamantri of Karnataka, Shri Baswaraja Bommai for his address. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶೋಭೆಯನ್ನು ತಂದಿರುವಂಥ ಆದರಣೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಹಾಗೂ ಗಂತವತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದಂಥ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ಜಿ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಣಿಯವರೇ, ಯುವರಾಜರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಯೋಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಇಡೀ ಮೈಸೂರನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪರವಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಯೋಗ ಮನಸ್ಸು ದೇಹ ಒಂದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಚರಿತ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ, ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಬೇಕು. ಆ ಚರಿತ್ರೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಫಾರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. बहुत-बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी. Ladies and gentlemen, Prime Minister Modi ji himself is a committed yoga sadhak. He epitomizes the rewards of yoga. He epitomizes humanity. कोरोना काल में कोविड टीकाकरण के अभियान को आम जनता तक पहुंचाना और दूसरे देशों को मदद का हाथ बढ़ाना मानवता का प्रतीक है. स्वच्छ भारत और शौचालय निर्माण के अभियान से